Hello, dear students. Very good morning. Now, in this class, we are going to start a new topic, and that is contemporary South Asia. In this contemporary South Asia, we're going to understand that, first of all, what we mean by South Asia, which are the countries we regard as in South Asia. And in that terms, because here you can see kind of flags, and a lot of flags are here. And this poetry was Subhas Rai's adaptation of Liberty Leading the People. It was painted by Eugene Delacroix in 1830. And here you can see a lot of flags. These flags are also associated with the Indian subcontinent. So mainly we are going to discuss about the Indian subcontinent, which we regard the Indian subcontinent is in South Asia. So the countries which are neighboring country of India, like Pakistan, Bangladesh, Bhutan, uh, these countries, Maldives, Sri Lanka, these countries we're going to talk about. We're going to talk about the relationship of India with these countries. What are the problems or the setup, whether democratic setup or whether military or dictatorial setup, or what kind of setup, government setup is there in the countries in South Asia. So now let us come to our, because the last topic was related to the alternative centers of power, in which we discussed about the European Union and ASEAN and all other things. Now we have come to our region, and that is the Indian subcontinent. So therefore, first topic of this chapter is, first of all, what do you mean by South Asia? South Asia से आप क्या समझते हो? क्या है South Asia? This is your first topic. So we are familiar with the crippling tension जो साउथ एशिया में है, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें हम. हालांकि एट द सेम टाइम आप देखिए, चाहे हमारे बीच में क्रिकेट मैच होता है एक of between India and Pakistan, it is very popular as far as cricket match between India and Pakistan is concerned. Whether it is in India or whether it is in Pakistan, बहुत सारे सपोर्टर्स हमारे यहाँ से पाकिस्तान में मैच देखने जाते हैं, वहां से हमारे यहाँ पे आते हैं. बट फॉर लास्ट मैनी ईयर्स bilateral जो हमारे जो मैचेस हैं विद पाकिस्तान, दैट हैज नॉट बीन गोइंग ऑन ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. बट यहाँ पे आपको बता रहा है कि दैट you all are familiar with the tension during the India Pakistan cricket match. Also we have also seen the goodwill and the hospitality shown to visiting India and Pakistan fans by their host when they come to watch a cricket match. जब कभी भी मैच देखने एक दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं तो एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक एडवर्सरी दिमाग में, वो एक नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे कंट्रीज को लेके भी है. तो साउथ एशिया में ये कंट्रीज जो है, वेदर अबाउट इंडिया और पाकिस्तान, इनके डिफरेंसेस या एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल रीजंस जिनकी वजह से हमारे बीच में डिफरेंसेस हुए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस chapter. Now this is also symbolic of the larger pattern of South Asian affairs. So as far as India and Pakistan is concerned, लार्जर पैटर्न में आप साउथ एशियन कंट्रीज में ऐसे डिफरेंसेस भी देखोगे, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम जो हॉस्पिटैलिटी है, जो गुडविल है उनके बीच में, दैट्स आल्सो वी गोना अंडरस्टैंड. नाउ इन आवर रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल बोथ गो हैंड इन हैंड, जहां पे आप राइवलरी भी देखते हो और गुडविल जो है एक दूसरे को लेके वो भी देखते हो. सो राइवलरी एंड गुडविल, होप एंड डेस्पेयर, म्यूचुअल सस्पिशन एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट. सो ऑल दीज कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, जैसे चाहे वो राइवलरी है एक दूसरे को लेके ना, विरोधीपन, ओपोनेंट की फीलिंग, या गुडविल एक दूसरे को लेके लाइक कॉपरेशन की फीलिंग. उसके अलावा होप, आशा भी आपको यहाँ पे दिखती है, साथ साथ निराशा भी आपको यहाँ पे दिखती है, क्योंकि डिफरेंसेस जब होते हैं आपस में, डिस्प्यूट इतने, लाइक जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना. सो यू सी दैट despair, है ना, इन द रिलेशनशिप, like that is not improving, है ना. But at the same time you see hope also in this region, म्यूचुअल सस्पिशन एक दूसरे को लेके, और ट्रस्ट एक दूसरे को लेके. तो कई सारी चीजें जो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं वो आप इस रीजन में देखते हो. सो that's the system of South Asia. Now let us begin first of all the question, what is South Asia? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ये तो समझ गए कि आपने ये बोल दिया कि इस साउथ एशियन रीजन में यू सी बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग थिंग, यू सी होप एज वेल एज डेस्पेयर, यू सी म्यूचुअल सस्पिशन एज वेल एज ट्रस्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साउथ एशिया? तो साउथ एशिया में मेनली हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट
की जो कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी हैं वो? बांग्लादेश, भूटान नेबरिंग कंट्री है हमारी, इंडिया, मालदीव्स जो कि एक आइलैंड है, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो दीज आर द कंट्रीज विच वी रिगार्ड इन साउथ एशिया, जिसको हम साउथ एशिया में लेते हैं, जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की है मेनली। नाउ द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ and the vast Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the south. West and east respectively provide a natural insularity to the region, which is largely responsible for the linguistic, social and cultural distinctiveness of the subcontinent. So हमारा, as far as the geography of this region is concerned, you know, at the north side we have the vast Himalaya, big Himalayas range, and in the south we see the ocean, the Indian Ocean, east west we see, in east we see the Bay of Bengal, and the west we see the Arabian Sea. So this is the geographical position, the strategic position of this region. इस region की strategic position है। हमारी जो boundaries हैं जो region की are not as clear in the east and the west as they are in the north and the south, because north और south को लेके तो इतने, because there, as we talked about, that in north we have that Himalaya and south we have the Indian Ocean. Border disputes भी अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक दूसरे कंट्रीज में बहुत सारे हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार are often included in discussion of this region as a whole. तो हम अफगानिस्तान और म्यांमार को भी, और जो यहाँ पे साउथ एशिया को लेके रीजनल कोऑपरेशन को लेके सार्क is, as we talked in the last chapter about ASEAN. So here in this region, a very important association organization was formed, and that was an association was formed that was South Asian Regional Cooperation, that is SARC. And in the South Asia, we include, in the SARC, we include Afghanistan and Myanmar also. So they somehow they are kind of part of this subcontinent, Indian subcontinent. Now, however, China being a big country, जो हमने ईस्ट एशिया में देखा था, चाइना का लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, राइज ऑफ चाइना। चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन में भी। That's why you see China's relationship with Sri Lanka, relationship with Bangladesh or Pakistan, है ना? We know about relationship, bilateral agreements with India also. So China, being a big country in this region, being a big country in Asia, it also has its own interest in this region. उसके अपने interest हैं इस region में। तो चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रीजन। लेकिन उसको हम साउथ एशिया रीजन में काउंट नहीं करते, लेकिन चाइना ऑल्सो हैज इट्स ओन इंटरेस्ट, इसीलिए उसके रिलेशंस अभी हमने डिस्कस किए सारी कंट्रीज के साथ में है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, हम यूज करेंगे जो साउथ एशिया वर्ड है टू मीन द 7 कंट्रीज जो हमने अभी ऊपर रेफर की, उन कंट्रीज के बारे में। Thus defined, South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. तो साउथ एशिया में डाइवर्सिटी हर सेंस में आपको देखने को मिलती है, लेकिन एक पूरी को जियोपॉलिटिकल स्पेस में हम इस रीजन को स्पेसिफिकली, इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हम एक जियोपॉलिटिकल यूनिट के रूप में काउंट कर रहे हैं, है ना? मतलब इस रीजन की भी अपनी, जैसे आसियान की इंपॉर्टेंस है, आसियान में एक कॉर्डियल कोऑपरेशन हुआ, तो ये रीजन भी वैसा ही है, बट जैसा आसियान सक्सेसफुल हुआ वैसा ये रीजन इट हैज नॉट बीन दैट मच सक्सेसफुल। जैसे एसोसिएशंस की अगर हम बात करें, हम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया हैज बीन लाइक इट्स ग्रोइंग, इट्स जीडीपी इज ग्रोइंग इन अ वेरी फास्ट अमाउंट, इट इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, है ना? सो यू कैन, वी हैव दैट, वी आर डेवलपिंग कंट्री, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दैट एसोसिएशन, द रीजनल कॉपरेशन, वो रीजनल कॉपरेशन का कुछ लैक आपको इस रीजन में मिलता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लाइक मेन उसमें फैक्टर है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? अब देखिए, वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे साउथ एशियन रीजन जो हमने बात की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना, मेनली हम इन्हीं 7 कंट्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम सभी कंट्रीज में एक जैसा नहीं है। वैसे देखो, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें, बोथ गॉट पार्टीशन, है ना, in 1947, both got independence in 1947, but ultimately what happened in Pakistan, the democracy has not been that much successful,
as it comparable to India, because in India the democracy has been successful, है ना? We have here democratic government. Currently also in Pakistan there is a democratic government, but there is a kind of military establishment. वहां पे एक establishment है और वो वहां की military है, army, इसलिए वहां पे time and again dictatorship came. जो आपका नेक्स्ट टॉपिक पाकिस्तान में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान में टाइम एंड अगेन डिक्टेटरशिप आई, अलग अलग जो डिक्टेटर्स हुए वहां के मिलिट्री रूलर्स जो उन्होंने टुक ओवर कर लिया कू करके. नाउ डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, इन सब प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन के बावजूद श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, है ना? ब्रिटिशर्स से आजादी के बाद में श्रीलंका और इंडिया ने सक्सेसफुली, as far as India is concerned, India has been successful in terms of democratic setup. हालांकि श्रीलंका भी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड वहां पे ऐसा था आफ्टर 1970s मिड that Sinhala versus Tamil, है ना, majoritarianism concept was also adopted in Sri Lanka. तो कुछ loo falls वहां पे हुए, but ultimately both have been like regarded as the democratic setup country. We will study more about the evolution of democracy in India. जिस जो हमने देखा था, हमने रीड किए हुए हैं ऑलरेडी चैप्टर्स इन द पॉलिटिक्स इन इंडिया, इन दैट वी रेड अबाउट द कांग्रेस सिस्टम एंड दैट द डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. सो दैट हैज बीन द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड in that we understood that there might have been like a emergency here in India, but ultimately we can say that democracy has been successful in India. Why? Because the constitution of India has been successful. वो successful रहा है. It has that like flexibility as well as a kind of staticness also. So India's constitution is a dynamic constitution. तो वो हमने politics in India में अच्छे से read किया था. Possible to point out many limitations of India's democracy, but we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout its existence as an independent country. So many negative points you can give, critics can analyze, they can criticize the Indian democracy also, है ना, in terms of the development and all other aspects, but above all you can say that India's democracy has been successful because time and again it has sailed through like different time with that democratic setup only. उस democratic setup से वो sail through हुई है. उसमें हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि like as it happened in Pakistan that military took over and kind of dictatorship happened here in India, है ना. In the politics in India book we read about the emergency, but that was also a very short time period that happened, है ना. But that was you cannot claim as a kind of dictatorship. उसको भी आप dictatorship के रूप में claim नहीं कर सकते. कुछ fallouts थे उस duration में, लेकिन वो बिल्कुल एक short span के लिए, और उससे हमें सीख ही मिली, सीखने को बहुत कुछ मिला. तो इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे रही? सक्सेसफुल रही. लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एक तरीके से they were part of India, they experienced both civilian and military rulers. वहां पे civilian rulers भी रहे, military rulers भी रहे. बांग्लादेश जो है रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. कोल्ड वॉर के बाद में बांग्लादेश में मिली डेमोक्रेसी ही थ्राइव किया और अब डेमोक्रेटिक कंट्री है. पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनर्जी भुट्टो एंड नवाज शरीफ रेस्पेक्टिवली, लेकिन अल्टीमेटली मिलिट्री coup दोबारा हो गया वहां पे. पहले भी coup हुए, जनरल अयूब खान बने थे सबसे पहले मिलिट्री रूलर वहां पे, उसके बाद जनरल याया खान, है ना, जनरल, उसके बाद में याया खान, जनरल टिक्का खान, जनरल जिया उल हक, एंड देन अगेन in 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ. So many times Pakistan saw that dictatorship or military coup पाकिस्तान को देखने को मिले. It has been run by civilian government again since 2008. ठीक है. Now Nepal was a constitutional monarchy. नेपाल जो था constitutional monarchy बन गया है एक तरीके से with the danger of king taking over executive powers. लेकिन ultimately 2008 में क्या हुआ? The monarchy was abolished. Earlier it was constitutional monarchy, but the monarchy was abolished in 2008 and Nepal emerged as a democratic republic. So from the experience of Bangladesh and Nepal, what we can say? We can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia. तो नेपाल का एग्जांपल ले हम, पहले वहां पे मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई, फिर अल्टीमेटली 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी खत्म कर दिया गया, डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पे अडॉप्ट कर लिया गया. बांग्लादेश में
1971 में बांग्लादेश बना, उसके कुछ टाइम बाद में वहां पे भी मिलिट्री कू हुआ, लेकिन अल्टीमेटली कोल्ड वॉर के बाद में वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो रही और सक्सेसफुल रही हैं। तो अबाव ऑल वी कैन से, पाकिस्तान का हमने एग्जांपल देखा दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे डिक्टेटरशिप रही, मिलिट्री रूल रहा है, लेकिन अबाव ऑल वी कैन से दैट दिस रीजन हैज एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज अ better form of government and it is becoming a accepted norm in the whole region. इस पूरे रीजन में ये जो डेमोक्रेसी है एक्सेप्टेड नॉर्म बन गई है। नाउ जैसे आपको एक डेटा भी दे रखा है यहाँ पे, देखिए डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। और हो सकता है शायद ये भी रीजन में हो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में ज्यादा रही। देखो कुछ डेटा आपसे पूछा लाइक डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, तो वहां पे पाकिस्तान में ओनली 37% पीपल आर सेइंग दैट डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, whereas in other states you can see nearly 60 to 70% people, as far as India is concerned 70% people say that democracy is preferable. Now people who say that sometimes dictatorship is better, so in this data you can see in this survey it was done, so in this survey you can see that in India it's only 9% people they prefer that dictatorship is also a kind of better form of government, whereas in Pakistan it is 14%. But the main difference here you can see the people who say that nothing matters to them, and in Pakistan it is nearly 49% people they say that nothing matters to them, whether it's democracy or dictatorship, everything is equal, same, nothing matters. So here also you can see like 21% people who say that that doesn't matter to me in India. But above all, if you just go through this data and if you analyze this data, above all you can say that much of the people of South Asian region want democracy and a democratic form of government. There might be like some fallouts of democracy, some loopholes of democracy, but above all the people understand the importance of democracy and the characteristics of democracy. So therefore they prefer democracy over any other form of government. Now, similar changes are taking place in the two smallest countries of this region also. Bhutan, एक भूटान कंट्री और है जो हमारी बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, इट्स वेरी स्मॉल कंट्री, इट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008। वहां पे मोनार्की थी पहले, लेकिन बाद में 2008 में उन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की गई, जिसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, लाइक इन ब्रिटेन इट इज, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है इट इज हेड ऑफ द स्टेट, ब्रिटेन के अंदर क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट बना रखा है, बस उसी तरीके से वहां पे किंग को हेड ऑफ द स्टेट बना रखा है, बट द रियल पावर आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द head of the government, and that is the prime minister there. So under the leadership of the king it emerged as a multi-party democracy. So ultimately Bhutan में भी क्या हुआ, the multi-party democracy setup was adopted. Maldives एक और हमारा नेबरिंग कंट्री, एक तरीके से साउथ एशियन रीजन की कंट्री है, आइलैंड कंट्री है. The other island nation, earlier there was sultanate था ना, kind of monarchy there till 1968 when it was transformed into a republic with a presidential form of government. In June 2005, the Parliament of the Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. So ultimately, they also adopted that multi-party system, democratic framework. Now, the Maldivian Democratic Party, that is MDP, dominates the political affairs of the island. The MDP won 2018 election also. So that's how this is all about the politics and the democratic setup or other kind of setup which are adopted by the South Asian countries. And here in South Asian region, we are talking about the 7 countries which we discussed, जो हमने डिस्कस किया अभी है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, Maldives and Sri Lanka. These are the 7 countries which we are talking about. Now, despite the mixed records of democratic experience, the people in all these countries share the aspiration of our democracy. So democracy के जो democratic experience रहे हैं उन सबके बावजूद जो यहाँ के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी में उम्मीदें, अपनी एस्पिरेशंस, जो होप है वो देखते हैं. एंड दैट्स व्हाई जो अभी हमने डेटा की बात की है, जो सर्वे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना दैट मच ऑफ द पीपल सपोर्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ अ रीसेंट सर्वेज ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन द 5 big countries, इसी की बात कर रहा है ये, ऑफ शोड दैट देयर इज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, है ना, इन ऑल दीज कंट्रीज. Ordinary citizens, whether rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institutions of respectively representative democracy.
they prefer democracy over any form of government and think that democracy is suitable for their country. So ये जो है सभी क्या प्रेफर करते हैं, that democracy over other any other form of government. So there might be fallouts, people understand the negative points of democracy also, but above all the characteristics, the benefits are much more. So therefore people support the democracy in this whole region. Now these are the significant findings, for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous countries in the world. अब देखो, जब हमें भी आजादी मिली तो like many western countries they were criticizing and they were saying that India being a, like earlier we even did not have that literacy rate also, no, not in a great extent. We were having illiteracy in huge amount, so we were facing difficulties. So at that time western countries said that like India and the other countries in this region, they will not like thrive. Like after some time military, their army or might be dictatorship will take over. But ultimately what happened, this whole region, in somehow there are some fallouts, like in Pakistan it happened, like in Bangladesh it happened, but above all we can say that democracy has been successful in this region. इस region में democracy क्या रही है, flourish हुई है, successful रही है. ठीक है. Now another human development report here in 2018 of, it is given to you, and data, the HDI rank, that is human development index rank, on the basis of different aspects like infant mortality rate, है ना, gross enrollment ratio, adult literacy rate, life expectancy. These all factors are included in HDI while HDI is calculated. So just go through the South Asia region. Whether we talk about Bangladesh, India, Nepal, Pakistan or Sri Lanka, the condition in terms of HDI is not like very good, है ना. हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है साउथ एशियन रीजन में. So in terms of poverty हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं. जैसे इंडिया की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू 2018 HDI रिपोर्ट इंडेक्स में हमारी जो स्टैंड था वो हमारा कहाँ पे था, 130th प्लेस, 130 नंबर पे हमारी रैंक थी अकॉर्डिंग टू HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन विच ऑल दीज फैक्टर्स आर इंक्लूडेड. और उसमें भी जैसे, और अगर हम बात करें साउथ एशियन रीजन में, तो लाइक पाकिस्तान इट स्टूड एट द 150th रैंक, और स्पेसिफिकली जैसे श्रीलंका, हालांकि इट इज स्मॉलर देन आवर कंट्री, इट स्टूड एट 76th नंबर प्लेस. सो उसकी भी कंडीशन HDI के मामले में हमारे से तो इवन अच्छी है. So above all, because poverty and some problems we have to accept we have this in this region, इन सारी चीजों को दूर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और साथ साथ सोसाइटी भी यहाँ की जो है, सोशल इनइक्वालिटीज जो है हमारे यहाँ पे, वो तो सोसाइटी को गवर्नमेंट स्टेप्स ले, लेकिन सोसाइटी को भी इनको दूर करो जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो, सब फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट हो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के स्टेप से, सोसाइटी के वर्क से, एंड आवर HDI रैंक्स आल्सो गेट्स इंप्रूव्ड. We hope for better. Now in that sense, South Asian experience of democracy has expanded global imagination of democracy. Now we're gonna go through the next topic, and that is about the military and the democracy in Pakistan. So now we're gonna go through this topic, the military and democracy in Pakistan. Yes, dear students, now we have come to the next topic of this chapter, and that is the military and the democracy in Pakistan. Now, in this topic, we're going to understand that how military took over in Pakistan. However, Pakistan and India, like India was partitioned and Pakistan was made in 1947. Both have adopted the democratic setup, but democracy has been successful in India, but it did not happen in Pakistan. So what happened actually there? So after Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. So first, like military leadership which came was with the name of General Ayub Khan. And under General Ayub Khan, you know that 1965 war happened. 47 में भी हमारे यहाँ पे एक तरीके से इन्वेजन हुई थी. उस टाइम में वो मिलिट्री में थे, आर्मी में. That the POK which we regard today, and the crisis of POK that happened in 47-48. So
When we got independence, this dispute between India and Pakistan started, and it is even currently also going on. So General Ayub Khan was the first general who took over the administration of the country, and he got himself elected. Ultimately, he had to give office when there was a popular dissatisfaction against his rule. Now, this gave a way to a military takeover once again. So, once again, General Yahya Khan, later on, after General Ayub Khan, General Yahya Khan took over. And again, the military came in the establishment, in the government. Now, during Yahya's military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis. That was in 1971. So it was General Yahya Khan who was leading Pakistan at that time. When East Pakistan crisis, which we regard later on what happened, Bangladesh was made. East Pakistan was like converted into Bangladesh. So that Bangladesh Liberation War happened. Now, after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge an independent country, and that was called Bangladesh. After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, who was earlier External Affairs Minister of Pakistan. Later on, he became Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto. Okay. जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इट इज पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. So Zulfikar Ali Bhutto took over from General Yahya Khan, and he came to power in Pakistan. He led the country from 1971, after the end of the Bangladesh war, 1971 to 1977. Then the Bhutto government was removed by General Zia-ul Haq. Then ultimately what happened? In 1977, another military coup happened. मतलब बड़ा interesting है पाकिस्तान में, like military again and again it came back. Even currently, Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan, but it is said, and being political science student, you all are aware that the real establishment or the real power is in the hands of the army of Pakistan. Real power वहां पे आर्मी पर. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई. Democracy has been successful. कोई भी जनरल बना होगा, आर्मी का रूलर होगा, वो establishment नहीं कह सकते आप उसको, है ना? That is just an institution in our country. The real power is in the hands of all the people whom the constitution has given the power, like the head of the state, the head of the government. So General Zia-ul Haq also faced a pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected government, democratic government, was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto. She was daughter of Zulfikar Ali Bhutto. जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया-उल हक जब बने थे ना, वहां के प्रेसिडेंट बन के एक तरीके से लीडरशिप ले ली, तो उन्होंने फांसी की सजा दे दी. जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी मिल गई थी. बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, मतलब एक तरीके से बाद में, क्योंकि अब तो लीडर लाइक जनरल जिया-उल हक टुक ओवर, देन जुल्फिकार अली भुट्टो हैंग टू टिल डेथ. Later on in 1982, again the movement happened against General Zia-ul Haq. So again, elected democratic government came under the leadership of Benazir Bhutto. She was daughter of Zulfikar Ali Bhutto. Now, in the period that followed, Pakistan politics centered around the competition between her party, that was Pakistan People's Party, PPP. अभी भी ये पार्टी वर्क करती है, PPP. और एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग. ठीक है, अब ये मुस्लिम लीग, जैसे इसमें यहाँ पे दो पार्टी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग एन नवाज, मुस्लिम लीग नून बोलते हैं उसको ना, रिलेटेड टू नवाज शरीफ पार्टी. ओके, नाउ next what happened? Now this phase of elective democracy, it lasted till 1999. So till 1999 this phase of democracy lasted. Benazir Bhutto became prime minister. Later on Nawaz Sharif became prime minister, he was associated with Muslim League. Then 1999 what happened? Kargil War happened. You all are aware about the Kargil War, which happened between India and Pakistan. And at the time, General Pervez Musharraf was the general of Pakistani army. Now what happened? He stepped and he removed Prime Minister, who was Nawaz Sharif at that time. So in 2001, General Musharraf got himself elected as the president. So again, dictatorship came in Pakistan. Now Pakistan continued to be ruled by the army, though the army rulers have held some elections to give their rule a democratic image. So Pakistan throughout the history many times have been ruled by the army. However, interesting fact kya hai? Many times these dictators, you can term them even. So these military rulers have organized kind of fake elections also. And
दुनिया में एक मैसेज देने के लिए, लाइक वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, है ना. Since 2008, democratically elected leaders have been ruling Pakistan. So after General Pervez Musharraf, when Pervez Musharraf stepped down in 2008, uh, then since 2008, democracy has been going on in Pakistan. Currently, Prime Minister of Pakistan is Imran Khan. Tehreek-e-Insaf is the party of Imran Khan, and these factors have played role in the Pakistan politics. Now, several other factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy. And what are those? The social dominance of the military, clergy, and land-owning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected governments and establishment of the military government. Now, this question can be asked from you, and it can come in your mind. Sir, why there has been failure of democratic setup in Pakistan? As it has been successful in India, but why it happened in Pakistan? तो वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री को लेके वहां पे सोशल जो डोमिनेशन है, देखिए सोसाइटी के अंदर मिलिट्री को लेके यू कैन टर्म लाइक दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स सिंस इंडिपेंडेंस उन्होंने अपने आप को एक एस्टैब्लिशमेंट के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया कि पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी की जो इंपॉर्टेंस है वहां पे बहुत ज्यादा है ना. अदरवाइज आर्मी और दीज आर जस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सिक्योरिटी पर्पस से और अदर पर्पसेस गवर्नमेंट का वर्क करते हैं. वहां पे क्लर्जीज जो हैं दैट ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है ना, ऑर्थोडॉक्स सोच जो है वो बहुत ज्यादा हावी है. सो दीज आर द रीजंस दैट डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान को जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ में, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि वहां की मिलिट्री जो है टाइम एंड अगेन आई है. सर ये कैसे कह सकते हो आप कि पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ में जो है इसने भी प्रो मिलिट्री ग्रुप्स को पावरफुल बनाया? कैसे? क्योंकि वहां की मिलिट्री को एक तरीके से डर है इंडिया को लेके. वो डर बताते अपने देश में सभी को भी बताते, लाइक इंडिया विल टेक ओवर, है ना, पार्टीशन हुआ मतलब वो वापस मिला लेंगे. तो वहां के लोग भी इसको रिगार्ड करते हैं और पाकिस्तान में मिलिट्री भी इस चीज का डर दिखा के जो अपने आप का अपना इन्फ्लुएंस और अपना डोमिनेंस ज्यादा करती है इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज आल्सो मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल. So these groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed, that Pakistan's security would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy. So the groups which support the military, they clearly say that democracy is a kind of sham and they cannot be successful in terms of security because the leaders are selfish and all, है ना, selfish-minded parties these are. So we should support military, है ना, military establishment must be there. So this is all about the Pakistan politics. Further topic we're going to discuss everyone in next class and of the remaining part of this topic, and in Bangladesh, what is the political setup of Bangladesh.